Good afternoon, students. Very energetic good afternoon to all of you. I am CA Asha. I am Priyambada. Good afternoon, students. We are here today to guide you. We as a guru are here to hold you and guide you, and we will try to guide you regarding how to prepare and how to attempt for your exam. This session is scheduled within intention so that we can guide you and help you and make clarity in your thoughts. So it will be very helpful while you are going to attend your examination for this November 2023. In this session, we are going to talk about the Paper 5 Advanced Accounting Syllabus and its preparation strategy and how you are going to attempt your exam for this November examination. Because lots of the students have query how to attempt your question, how to make time management in exam. Because in some cases, they are able to prepare, but they don't know how to attempt. The attemptation on examination, how to going to good how to score good marks in the examination is a very much necessary. We will try to give you some tips which will be very helpful while going to prepare for your examination and going to attempt for your examination. As you are aware, for this your paper 5 advanced accounting, if you are, I think, we hope you are very well known about your syllabus, and in this we will try to give you some tips regarding this and the what is the section wise skill and the skill wise weightages and what is the pattern of examination, and it will be very helpful for you. Loads of the material is also provided by the BOS for your preparation, and for the preparation and the BOS app, Premvada will guide you. Over to you, Premvada. Yes, a very warm welcome to all our students, our friend. As your mentor, CA Asha already told you that you all are CA intermediate students. You are not a graduate students now. You must have done your graduation or you are in the process of your graduation. CA intermediate, that means the second step of your chartered accountancy course have already started. So you must be well versed with your syllabus and everything there in your contents there. So please mentally prepare yourself that this is not a normal graduation course. You have to achieve expertise in all your subjects. I agree this subject would be very easy. Once you're aware of the content and you're aware of the concepts and everything, this subject will be very easier and it will be on your tips. It is a very mark scoring Yes, paper and yes. it is a practical paper. It will be very helpful for you because in the theoretical paper, na, students got very bored. Yes. But for the practical, they are always enthusiastic and got the good scores. Yes. Once you know the answer, you can easily perform that question. So, in consideration with the time can be adjusted if your preparation is good, if your concept clarity is good. So focus on your concepts, focus on your preparation. I hope you must have done one round of your preparation. And your talent, hard work and dedication, Yes, definitely will surely lead to the success. now it's not time to move here and there, and it's not a graduation course. Focus on your studies. It's time to prepare yourself, devote yourself time, and to tell you the truth, whatever you're doing it for yourself, not for your parents, not for your family, your friends. You're doing it for yourself. You will be benefited in future. So focus, study, concentrate, do as much as practice as you can. Without practice, this subject will not help you. And see, your course is a chartered accountant course. So accounting is the core area. Without understanding concepts, you will not achieve anything. And for the clarity of the concepts, the BOS is always here for you, is always available for you to guide you and to clear your all doubts and any other problems. If you have, you can contact us. Yes. And for the concept clarity, loads of the material is provided by the BOS in the different forms. Yes, yes. So there are so much of material available online, offline. I hope you already have your study materials and you must have done one round of your preparation in the books. But yes, only reading of question will not work you out. You have to practice, practice and practice. The whole mantra of clearing the accounting paper is practice, practice and practice. Written practice is very much necessary for clearing this paper. Yes.
You should have registers, as much registers as you can. And practice doesn't mean you're checking out the book and then you're solving the question. You should solve your question yourself and identify where you are stuck, which problem you're facing. Then only you see the question, your study material, and then again solve that question. Solving question only one will not help you. All the critical questions should be solved at least two times by you. So devote your time. At least 8 to 9 hours studies in a day would only help you to achieve the good marks. We are not talking about only accountancy, we are talking about the all subjects. So devote 8 to 9 hours for it. Minimum 8 to 9. Yes, minimum These 8 are to the 9. minimum 8 Minimum times. 8 to 9. See, ma'am already told you this is minimum time. So we tell you that there is so much of material our ICAI provide you. For example, we have an app called ICAI BOS app, where we have so much of material. For example, we have already done the live learning classes. The classes are available, recordings of the classes are already available on the app. You all have your smartphones. Please download this app and see all the classes where you are stuck. You can figure out, okay, I need to understand buyback of shares. So please identify that class and listen to that class only. But your doubts will be clear in that class. In the recordings are available to guide you for your preparation. Then you have revision test papers. Revision test papers for this attempt as well as the previous attempts are also hosted on website. So go through that. After doing a chapter, go through that the question of that RTP and try to solve yourself. Then you'll analyze whether you are able to understand this chapter well or not. So please do all the RTPs questions, then come in. At least 3 to 4 attempts RTPs You should do. you should do. Then comes to suggested answers. Previous year question papers as well as the suggested answers all are hosted over website. So please go through there, go through the app as well as the website and see how the question came last time, last attempt, last 2-3 attempts, so that you can figure out, okay, this kind of difficulty level is expected from us and Along we with should the do. difficulty, we just want to add some more points. Yes, It will be helpful you to how to present your answer. absolutely. What will be the presentation format, and it will be very helpful for the students. Absolutely. She rightly said, without presentation, you'll not be able to secure good marks. The presentation, the handwriting, everything is very important for your CA examination. Then comes to the mock test paper. One session of mock test paper has already been done. Now the other mock test paper is going to start around, I think, On from the 3rd of 3rd October. of October. So please be focused. Try to complete the syllabus before that and then solve that paper. The solutions are also available, but we would suggest you to solve that paper within a frame of 3 hours and then see the answers where you are stuck, so that you'll be able to analyze yourself, okay, these questions, these kind of questions are asked in the paper and we are able to solve this much questions. Or if you're able to complete the paper within the time, this is very nice, and you are able to solve all the questions, this is very nice. That means you're going to a right path. So there are so much of material ICAI Board of Studies is providing you. Please take advantage of all the materials available on the website, on the mobile app. And coming to the intricacies and the main topics of the subject, your mentor Asha will help you with this. Thank you, Premada. Now we will going to discuss how we have to prepare for exam. First of all, you should aware about the syllabus. As you know, there are the 13 accounting standards which are applicable for this paper 5 advanced accounting. Accounting standard 4, AS5, AS7, AS9, AS14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, and 29. These are the 13 these are the 13 accounting standards which are applicable for this paper, and the whole syllabus, which is given into the 10 chapters, and these 10 chapters are converted into the sections, because on the basis of the sections the weightage is allotted and the questions are given on the basis of the section wise weightage only. First of all, we are going to learn
what is the skill wise and the section wise weightages of the marks. And this the same skill wise section and section wise weightage, it is already hosted on the ICAI website. You can go through the website and find out this section wise and the skill wise weightage. Also, it is available on ICAI mobile app as well. So please see that. This would be the pattern of the question paper. So please be focused. In consequent with the marks, this table has been prepared. So now you will be aware that you would be knowing that how much time you will be spending on each particular topic. Right now, the whole syllabus is divided into the sections. There are the 4 sections. First section is covered the chapter which is related to the application of accounting standards. In the application of accounting standard, as we have already discussed, the 13 accounting standards will be there. And the weightage for this is will be going to the 20% to 26%. That means the marks will be allotted to 25 to 32. The main thing in this section wise and skill wise is related to the levels. There are the 2 levels for the all the sections. One level is the comprehension and the knowledge, and second is the analysis and the application. Most of you are knowing to about this, that the application and analysis will cover the 85% to 95%. That means, what is the application and analysis? Application and analysis, that means the application of the provisions, applications of the concept, the practical knowledge, how you are going to apply all the provision, and according to this you have to solve the case scenarios. I would like to add here that once you have understood that provision, that is okay. But now you have to apply this in the practical world. This is only examined in your examination. The analysis of that provision, that particular thing has to be taken care of and should be understood very properly. And objective of the paper is the practical application. Yes, the practical application of all these accounting standards. The level 1 is related to the comprehension and the knowledge. For the comprehension and the knowledge, the weightage will be the 5% to 15%. Some selected topics will cover this. For example, from the chapter 1, it can be asked. For the chapter 1, which is related to the accounting standards, both type of the question may be asked. That means it can be related to the comprehension and for the application analysis. Moving towards the chapter 2, the section 2. The section 2 is further divided into the 2 parts, in which 2A. 2A cover the 33% to 38%. That means 40 to 45 marks will be covering from this section 2, and this is related to company accounts. In this, the topics covers are ESOP, buyback, right shares, and from the ESOP, buyback and right share, there will be only the application analysis, no comprehension knowledge question which is related to this. It will not be asked from the these topics. That means you have to work on the practical aspect only, है ना? The second section, it covers the topic which are related to the amalgamation, internal reconstruction, and the liquidation. Same here, from this section only the application analysis question will be there. From the section 3 covers 15 to 20 marks, that means 12% to 16% weightage. And the topics which are related to these are the banking and the NBFC. And from these two topics, it can be from the comprehension and knowledge and application and analysis. Both type of the question may be asked from this section 3. And the weightage given to this section is very small. That means you can prepare these type of the question after preparing all the major part of your syllabus. Last section, important section, and it covers the weightage 25 to 30%. That means 30 to 35 marks.
and it is related to consolidation and your partnership. From consolidation, only the application analysis question will be there, and from the partnership, both types of the question may be asked. It can be from the comprehension and knowledge and from the application analysis. We have discussed that your entire syllabus, your entire content of syllabus is divided into the four sections. Section 1 is related to the accounting standards, which cover the 13 accounting standards. That means most important topic, and it is a compulsory question. First question will be the compulsory question, and that means your 20 marks is already fixed. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ए से आएगा ही आएगा, वो फिक्स है. तो आपको 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू कांट लीव, एंड यू हैव टू complete all these AS 13s because most of the AS are the interconnected. So skipping any of the AS, it may lead to the vacuum in the concept clarity. So we always advise you कि आपको सभी AS करने हैं. Try to cover all the AS as much as possible. After discussing about the skill wise and the section wise weightage, now we can move towards the pattern of the exam. क्योंकि students को aware ही नहीं है कि उनका exam pattern होगा कैसे. You have given the 6 marks. First question is the compulsory. So remaining out of the 5, you have to attempt the 4 questions. That means one internal choice is given here. है ना, तो आपको एक क्वेश्चन स्किप करना है. तो अब आपके डिसाइड कैसे करेंगे? फॉर दिस डिसीजन द एग्जामिनेशन इज गिवन यू द 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर. हमारे टाइम में नहीं था ये, नहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. यू शुड अवेल इट कि यू हैव टू यूटिलाइज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द 15 मिनट्स. एंड हाउ यू विल गोइंग टू यूटिलाइज दिस 15 मिनट्स? आपको 15 मिनट्स में वो चेक नहीं करना है, वो सोल्व नहीं करना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर क्विकली, क्योंकि जब आप एक बार रीड करेंगे देन यू आर गोइंग, यू कैन डिसाइड, यू कैन मैनेज कि आपको कौन सा क्वेश्चन यू आर वेरी वेल अवेयर कि आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर एग्जाम. आप उसको जो आपने सिलेक्ट किया है, आप उसको सिलेक्ट करके आप सबसे पहले क्वेश्चन वही करना है. उसके बाद नाउ यू कैन चूज द क्वेश्चन विच यू कैन स्किप. आउट ऑफ द 5 यू हैव टू स्किप 1 क्वेश्चन, तो आप उसमें से स्किप कर सकते हैं. तो 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आपको ऐसे करना है. एंड along with this selection of the question, one important things you have to going to done within the 15 minutes, आपको टाइम मैनेज करना है. आपको 3 घंटे दिए गए, 3 hours. विद इन द 3 hours आपको अपनी किस्मत बदलनी है. वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ये जिंदगी के 90 मिनट 60 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता. तो वो आपको जो 3 घंटे दिए जा रहे हैं ये आपसे कोई नहीं ले सकता, बट आपको अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को बताना है कि ये हम कर सकते हैं. अगर आप वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं तो सबसे पहले काम डाउन और ये डिसाइड कर ले कि हर क्वेश्चन को आपको 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सो दैट लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए 15 मिनट्स बच जाए, 10 to 15 मिनट्स की आप उसे गो थ्रू कर सके. अगर आपको कोई पार्ट स्किप हो गया है तो आप उसे फिर से कर सके. ये पूरी एग्जामिनेशन टिप हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हम आपको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. हम एक बार जर्नल में आपको डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट्स जो हमने अभी डिस्कशन किया कि क्या उसका पर्पस ये कि आपको पता है कि सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज कैसे है, तो आपको प्रिपेयर उसके अकॉर्डिंग करना है. बैंकिंग और एनबीएफसी आपके सबसे कम स्कोरिंग मार्क्स है, तो आप उसे लास्ट में रखिए. सबसे ज्यादा आपका यूनिट 2 का है और फर्स्ट, तो इसका मतलब यू हैव टू कंप्लीट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. ये तो आपको डेफिनेटली पहले प्रिपेयर करके रखने हैं क्योंकि इसमें से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम पैटर्न. इस टेबल से you can easily analyze that 2 topics are the most important topics. One is consolidation, another is the company account. Without understanding, do not think of leaving these topics at any cost. आपको ये जरूर करने हैं ये वाले टॉपिक्स, एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द स्टडी मटेरियल. आप why this 15 minutes is given? This is your strategy time. Strategize your question paper at this moment. First, read the paper thoroughly. Ma'am rightly said You have to read quickly and thoroughly. Now analyze. The first question is compulsory, you have no option. From 2 to 6, now you have an option. So strategize yourself which question you have to leave.
Point number one. Point number two, now analyze, prioritize which question is to be performed first, and then second, then third. Your priority in and sequencing of doing your answer sheet. So all these strategy has to be made in those 15 minutes only. You already have this time. And now coming to the paper. Do your question answer, perform that answer first, which you know the best, and leave the remaining part of the answer sheet if you're doing a question, and if you have ended the question in the upper part of the sheet, please leave that sheet and start the question in another next sheet. But yes, try to solve each and every part of the question paper in one go only. And if you are unaware, for example, you have started doing question number 2 first. 2A, you're already aware, you've done it very nicely. 2B, you're already aware, you've done it very nicely. But third, while doing it, you're stuck somewhere. That's okay. If you're not able to do 2C, please leave that sheet. Come to the another sheet, start doing the another question, maybe But question you have 4 to or leave question some 5. space for this But seat. yes, very true, you have to leave some space for it. Do not devote 1 hour or 2 hour only on that question. The time management is the most Sometimes क्या होता है important कि part. स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन को जानते हैं कि हाँ हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो पूरा टाइम वो 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लगा दे। आपको वो टाइम मैनेज करके चलना है। यू हैव टू मेक योर टाइम प्रॉपरली मैनेज, कि हर एक क्वेश्चन में चाहे वो आपको आता है या नहीं आता, you cannot devote more than 20 minutes on 20 that to question. 25 minutes. See, simple maths. 25 into 5 questions you have to do. It is all 125 minutes. 125 minutes comes to 2 hour 5 minutes. Now you have ample time to solve other questions which are you've not done before. आपने अगर 2 और 5 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद जो पोर्शन बचा है, यू स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन। एम आई राइट? सो आप ऐसे पेपर को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, and then you have ample time to revise all the question, use the calculator again. So calculation part is also very important for accounting paper. All right, so coming towards the table showing the pattern of the question paper. Yes, Ash. As we have the 10 chapters, and अब उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, now we are going to discuss this, what will be the pattern. The question 1, which is we have already discussed, that it is the compulsory question, and from the compulsory question this is related from the section 1, and section 1 it is related to the accounting standards. You are 13 accounting standards. अब उन 13 accounting standards से you can cover your 20 marks. आपके 20 मार्क्स तो फिक्स हो गए, और आपके एएस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं बिकॉज आप वो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ भी चीज नहीं होती है लाइफ में तो हमें यही लगता है कि नई नई चीज को हम कैसे करेंगे, हम डर जाते हैं। डोंट be scared. yourself, don't scare, you can do anything and you can achieve anything, everything what you want to achieve in your life, है ना। accounting standard very simple है। first of all try to read the concept. Most of the students right now students are asking how to attempt the accounting standards. We will discuss after this exam pattern कि how you are going to attempt the accounting standards question. First of all we will discuss all the questions from where they can be asked. The questions can be, the pattern could be like this way only. The section the question 2, it can be from the, it will be from the section 2, and section 2 is related to the, it from the two parts, section 2A and 2B, and from these sections which are related to the amalgamation and the reconstruction, the 20 marks question can be asked, and it will be the only the one application oriented. That means from the amalgamation or the reconstruction, our 20 marks question will be asked. अगर आप amalgamation कर लेते हैं तो आप easily you can attempt the internal reconstruction, because आपको उसमें सिर्फ entries करनी है. If you are very well known about the concept, how to amalgamate, how to make the internal reconstruction, so you can easily prepare your balance sheet. Question 3. The question 3, it can be asked from the section 4. Section 4 is from the consolidation or the partnership, and when the small oriented application oriented from, or the CAI application oriented from the section 3. That means it is a combination of the section 4
and the section 3. Section 3 is related to the your banking and the NBFC, and the marks can be from the 15 plus 5 or any other combination. 10 plus 10, 5 plus 15. No, it is already clear that the question of the 5 5 marks. Okay. So it is fixed. So if it this is question from the section 3 आपका 5 marks का ही question then it होगा, will be but 15 for plus. the 15 marks ना it is given already fixed कि one application होगा आपका 15 marks का section 4 में से. Okay. Then there is no combination. No, there will be no combination. And the question 4. And the question 4 is the combination of the, it is based on the section 4 only. From the section 4, there is a combination. It can be the one full-fledged question or it can be the 2 questions. There is a combination कि आपका 15 plus 5 हो सकता है या आपका 20 marks का whole हो सकता है. Moving towards the question 5, it can be from the section 2 or the section 3. That means 2 application, no CNK. Only the application oriented questions will be asked from the section 2 and the section 3. And these are the, there is can be combination 15 plus 5, 10 plus 10 or 5 or any other combination. That means जो आपका section 3 था अब आपका जो बैंकिंग एंड एनबीएफसी का था उसमें से भी आपका मोर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वहां पे जो वेटेज गिवन थी वो 12 to 15 गिवन थी. तो अब आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 and it also cover the 4 parts. And the 4 parts from the section 1 and the section 2. And from these sections, small knowledge-based question and the small application-oriented question may be asked. And 5 marks each from the question will be given. One more thing we would like to add here कि ये जो आपको पैटर्न बताया गया है क्वेश्चन 1 to लेकर 6 का, it is just only the suggested. That means any permutation combination can be there. वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है बट मार्क्स विल बी द फिक्स कि मार्क्स आपके इस सेक्शन में से इतने मार्क्स का ही आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न ना यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक करना. विदाउट मेकिंग एनी टाइम मैनेजमेंट ना नोबडी कैन अचीव देयर टारगेट्स. तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये टॉपिक कवर करना है और उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है. Now moving towards the queries, students are asking कि how to attempt the AS question. Most of the students, even हमें मेल भी आती है, फोन कॉल्स भी आती है कि मैम AS का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वी आर नॉट अवेयर कि उसको रीड कैसे करना है, हमें बेयर टेक्स्ट से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल से पढ़ना है. उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और वो क्या करते हैं, इसीलिए वो बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं. Excess of everything is bad. First of all, weightage is also provided along with the study material as the accounting pronouncement. लेकिन आपको मेन ये है कि study material is given all the provisions of the accounting standards. We try to given all the provisions in the very simple language. Because students को क्या होता है अगर weightage पढ़ने जाते हैं वो उन्हें क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा. हमने ट्राई किया है कि जितना भी प्रोविजन है, जितना भी आपको एप्लीकेबल प्रोविजन आना है, जैसे AS4 का एग्जांपल लें हम, AS4 के सारे प्रोविजंस हमने इस चैप्टर में कवर किए हुए हैं और सिंपल लैंग्वेज में. और उसके बाद हर प्रोविजन के बाद इलिस्ट्रेशन डाली गई है, ये चार्ट डाले गए ताकि आप उसे इजीली प्रोवाइड कर सकें. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प के लिए हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि बोर्ड ऑफ स्टडीज ने आपके लिए एक सारांश निकाला है. सारांश के बारे में मैम आपको बताएंगे. सारांश क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपाइलेशन है जिसमें हमने कैप्सूल फॉर्म में जितने भी दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट जर्नल में भी अवेलेबल है. आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल के लिंक पे जाएंगे तो आपको सारांश भी मिलेगा और आपको कैप्सूल्स भी मिलेंगे. आपको क्विक रीजन के नाम से आपको मिल जाएगा जिसमें क्या जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्विक नोट्स में चार्ट फॉर्म में सभी प्रोविजंस गिवन है. तो वो आपके वेरी हेल्पफुल है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम कि आप उसे क्विक रीजन कर सकें. उसका हमने नाम भी क्विक रीजन दिया है फर्दर हेल्पफुल के लिए क्योंकि कैप्सूल के जितने भी पार्ट है उसमें हमने चैप्टर्स को भी कवर किया, लेकिन स्टूडेंट्स की मोर हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जितना पार्ट है वो कंपाइल करके सारांश में डाला गया है. तो आप जितना भी आपका स्टूडेंट उस कंपाइलेशन है आप उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप इजिली उसे रीड कर सकते हैं.
अब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, देर ऑल इन टैबुलर फॉर्म, डायग्राम फॉर्म। आप उसमें से सारे डायग्राम्स टैबुलर फॉर्म में लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए सरांश इज अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प यू, कि फटाफट रिविजन हो जाए, आपको सारे प्रोविजंस भी पता चल जाए। बट यस, फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्रोविजंस यू नीड टू प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस के लास्ट डे के लिए रखेंगे तो आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा। अब I have a question with your mentor that is the number important for AS? If a question comes and I am not aware whether it is for AS4 or it is for AS29, what to do, ma'am? You are not required to give the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेम और नंबर। अगर आपको नहीं पता है, यू आर नॉट अवेयर, कि आप श्योर नहीं है, जब तक आप श्योर नहीं है यू आर नॉट एडवाइज टू गिवन द रोंग नेम और रोंग नंबर। इफ यू आर अवेयर, आपको प्रोविजन पता है, तो आप सिर्फ ये रेफरेंस करके दीजिए कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लिख देंगे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसी से कवर हो जाएगा। गलत चीज देने से बेहतर है सही चीज देना। गलत चीज से हमेशा, अगर आपने रेफरेंस दिया AS5 का और वो प्रोविजन आपने डाला हुआ AS4 का, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया, आपके मार्क्स हट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप कोई भी गलत नंबर ना दें, कोई भी गलत नेम ना दें। आप सिर्फ ये लिखिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आप उसको प्रोविजन चाहिए। द बेस्ट मेथड कि आपको एएस का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी थोरोली। आफ्टर रीडिंग द थोरोली, नाउ अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ प्रोविजन है। आपको नंबर नाम बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये बताना है कि ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन, ये प्रोविजन से रिलेटेड है ये टॉपिक। आपने उसको रेफरेंस दिया। नाउ आफ्टर दैट जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी के ऊपर अप्लाई कीजिए कि जो केस स्टडी गिवन है उसमें ये एप्लीकेशन ऐसे होना चाहिए। थर्ड, कंक्लूड द आंसर। दैट मीन्स फॉर 3 स्टेप्स आपका जो भी आपका आंसर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर है जो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन देना है, उसके बाद आपको उसकी एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। और जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितने भी अकाउंटिंग, हर सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग इज अवेलेबल। स्टेप मार्किंग मीन्स आप जितने स्टेप्स करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने प्रोविजन दिया, अगर आपको सिर्फ प्रोविजन याद है, आपने प्रोविजन दिया, तो प्रोविजन देने के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने प्रोविजन के बाद अगर आपने प्रोविजन नहीं दिया, आपने सिर्फ एप्लीकेबल करके बताया, तो सिर्फ एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें फोन करते हैं, मेल करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने किया था, बट मैम मेरे मार्क्स पूरे नहीं आए, मुझे मार्क्स कम मिले। अब मार्क्स कम मिले वो आप कैसे एनालाइज करोगे, वो आपने जज किया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, या आप सजेस्टेड आंसर जो वेब होस्टेड है उससे कंपेयर, आप उससे कंपेयर करें कि उसमें कैसे प्रेजेंटेशन दी है। प्रेजेंटेशन करनी आनी बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रेजेंटेशन, शुभजीत इज आस्किंग आई एम फेयर इन एस मोस्टली, नो नो, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप ये कहा है कि डरना नहीं है। डरना किस लिए है? एक छोटा बच्चा होता है, जब वो कुछ भी सीखता है, एक तो पहला कदम रखता है, तो उससे ज्यादा डर जिंदगी का कोई डर नहीं होता। क्योंकि जब वो पहला कदम रखेगा, दूसरा कदम रखेगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी, उसको दर्द होगा, और उसके लिए लाइफ का हर एक्सपीरियंस नया है। वो बच्चा भी मेहनत करके आगे बढ़ता है, अपने डर को खत्म करके। आप जब तक अपने डर में रहेंगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं पाएंगे। डर को हटाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और आगे की कि हाँ मैं एएस कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एएस करना कैसे, आपके पास 13 एएस है, यू कैन अलॉट डेज टू योर एएस। दैट मीन्स आप 13 एएस के लिए मिनिमम 2 डेज आप एएस, एक एएस को दीजिए। मिनिमम 2 डेज का मतलब क्या है कि पहले अगर मैंने AS4 स्टार्ट किया है रीड करना, अगर प्रियंवदा एक स्टूडेंट है और मैं उसको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, तो आप पहले 2 दिन उस अच्छे से उस प्रोविजन को पढ़िए। साथ में हर प्रोविजन के साथ जो इलस्ट्रेशन दी है, आपको उसको रिटर्न सॉल्व करना है। बेशक उसे देख के कीजिए, कि जैसा दिया है वैसा कीजिए,
written, that means written in this register which you've already prepared. हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है. जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड और आपके हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है. आपका माइंड, आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है कि माइंड ने देखा, समझा, आंखों ने पढ़ा और हाथ ने लिखा. चाहे आप उसे देख के एज इट इज रिटर्न कीजिए तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन को मुझे ऐसे, इसको ऐसे अप्लाई करना है. 2 डेज रीड करने के बाद आप उसको लगातार 7 डेज तक, एटलीस्ट मिनिमम 5 डेज तक आप रिवाइज कीजिए. अब आप कहेंगे कि मैम रिवाइज कैसे करेंगे, आपने फिर से किया. मैंने आज AS4 मंडे को शुरू किया. मंडे को मैंने अच्छे से पढ़ा. मुझे मंडे को उसे करने में 1 घंटा लगा. 2 डेज का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 दिन पूरा सिर्फ यही AS4 पढ़ना है. नहीं नहीं, मैं सिर्फ उस टॉपिक कि मैंने 2 दिन के लिए 1-1 घंटा AS4 को अलॉट कर दिया कि मैंने 7 से 8 मैं AS4 पढ़ूंगी, समझूंगी, लिखूंगी. रीड, राइट, थिंक, ये सब करना है. अब उसके करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने उसे अच्छे से मंडे को किया, आपको 60 मिनट्स लगे. जब आप ट्यूसडे को फिर से करेंगे, अब आपको 40 मिनट्स लगे. आपको प्रोविजन आपको समझ में आने लगा है. सेकेंड डे में आपको समझ में आने लगेगा. थर्ड डे करेंगे तो आपको 30 मिनट्स लगे कि माइंड ने समझ करके अब याद करना शुरू किया है. 4th डे में आपको 20 मिनट्स लगेंगे. ठीक है, 4 दिन आपने लगातार पढ़ा, 5 दिन, उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक देके जब आप फिर से रिवाइज करेंगे, अब आपका माइंड उसे अच्छे से पढ़ चुका है, याद कर चुका है, तो आपको सिर्फ रिवीजन देनी है, तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगे. दैट मीन्स आपको अपने डेली के मॉर्निंग के 2 आवर्स AS को अलॉट करने ही करने हैं कि ये मैंने 7 से लेके 9 बजे तक मुझे AS करना है. अब 7 से 9 में क्या करना है आपको, उसमें से आधा घंटा आपको पुराने AS की रिवीजन के लिए रखना है. दैट मीन्स आप 1.5 घंटे में नया AS करेंगे, समझेंगे, और आधा घंटा आप पुराने को रिवाइज करेंगे. इसी तरीके से जब आप सारे AS करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और आपको हमेशा वो याद रहेगा. रिफ्रेश करते रहेंगे. और आपका किसी भी चीज को, ये एक साइंटिफिकली भी है कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आती है. माइंड उस पर वर्क करना शुरू करता है, वो चीजें समझ में आती है, याद होती है, और आप उसे क्लियर करते हैं. So that means 3 round of revision for every AS and you will be through with all the accounting standards. 3 revision, without 3 revision you cannot do the question. See, while doing the first round of your preparation, analyze, think. Even if you overthink, also think again कि ये provision बना किस लिए है, what is the basic idea and behind what is the reason why it has been made. उसके बाद आपने जब समझ लिया एक बार, सेकेंड डे में यू विल नॉट गेट मच टाइम, यू विल नॉट स्पेंड मच टाइम, जल्दी जल्दी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. ठीक है, अब आपने 3 प्रिपरेशन तो कर ली एक AS के लिए, ऐसे आपने सारे प्रिपरेशन सारे AS किए. वंस यू आर डूइंग द पेपर, मैम राइटली सेड दैट first you have to write the provision that this question is related to this provision only. Then in the second paragraph you write what is there in the question, that this has been asked and how the above provision is applied in this question. And the third, what is your third paragraph say what is your conclusion in this question. So this is a 5-mark question. 5-mark question doesn't mean that you have to fill 1 page or 2 page for the question. If the question is coming in half page and your provision is correct and the application with along with your decision conclusion is correct, you will get full marks. But yes, the length of your answer does not define the marks. So please focus. Yes. If don't make stories don't on the make answer sheet. you make it easier for the examiner to check your answer sheet, he'll make it easier for you to give you marks. आप अपने आप को समझ के देखिए. इफ यू आर गोइंग टू चेक नोट्स ऑफ द आंसर शीट, है ना, अब आपको फोर्स करना है एग्जामिनर को, चेकर को, कि वो आपकी आंसर शीट को अच्छे से चेक करे और अच्छे मार्क्स दे, अच्छे दे. एग्जैक्टली. तो आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आपकी आंसर शीट है आपकी प्लेस पे. जितना क्रिस्प एंड जितना अच्छा प्रोविजन आपने प्रॉपरली लिखा होगा विद अ गुड लैंग्वेज, he'll be able to understand that more and he'll give you marks that easily. You have to just उसका टाइम बचाना है कि आपका आंसर ठीक है,
जल्दी जल्दी से करेक्ट करना है, आप वो उसमें कैसे मार्क्स देना करेंगे? है। यू नीड्स लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस देयर हम्म। इज नथिंग। आपने विदाउट एक विदाउट बार प्रैक्टिस प्रोविजन पढ़ा, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप पेपर में लिखेंगे, इट विल बी नो नो। वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड देन यूल थिंक इसका प्रोविजन वो वाला था या ये वाला था। इवन प्रियंवदा, अगर आप अपने हाथ को भी होल्ड करके रखेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ी देर बाद मूवमेंट करने में भी मुश्किल, आपके माइंड को समझना पड़ेगा सोचना कि मुझे पड़ता इसे है। मूव कैसे करना है। सो आप इसलिए अगर सिंपल चीज से भी अपने आप को कनेक्ट करें कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपनी बॉडी को, लेथार्जी बैठे हैं हम, वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप आलस में बैठे हैं, तो आपको अपनी बॉडी को उठाने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज को पहले मूव करना है, हाथ हम्म, को, पैर को, या कमर को। हम्म, आप समझ रहे हैं? जब इतनी सी चीज करने में आपका कनेक्शन वो होता है, तो ये तो एक नया प्रोविजन है, नया कंसेप्ट है, एक नई दुनिया है जिसमें आपने कदम रखा है। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग ना, तो अब आप कैसे जाओगे उस चीज को बार बार पढ़ के? और जब आप उसे इतनी बार पढ़ लोगे तो आपको उसमें मजा आने लगेगा। हम्म, जब आप चलना सीख जाते हैं तो आपको दौड़ने में मजा आता है ना? आपको फिर आप मैराथन में दौड़ते हैं, रेस में दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि अब आपको चलने में, दौड़ने में मजा आ रहा है, फिर आपको उड़ने में मजा आता है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना है। ऑलवेज ट्राई टू पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो बडी इन दिस वर्ल्ड गोइंग टू डू इट फॉर यू। सिर्फ एक आप खुद के लिए अवेलेबल हैं, जो खुद को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां आपने जाना है। हम सब आपके एक गाइडिंग पिलर्स हैं। वी आर गोइंग टू, सिर्फ आपको एक रोशनी का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे दौड़ना किसको है? आपको। आपको दौड़ना है। अपने डर को हटाइए। जितना आप ये कहेंगे कि मुझे सिर्फ डर लगता है, आई एम वेरी फेयरफुल अबाउट दिस, उतना ही वो डर बढ़ता है। जब आप कहेंगे कि आप उसे इग्नोर कीजिए ना, डर कुछ नहीं है, आप उस पर मेहनत नहीं करना चाहते। जब मेहनत करेंगे तो डर अपने आप भाग जाता है, डर भी दुम दबा के भाग जाता है। देर इज अ क्वेश्चन, देर इज अ क्वेरी दैट मैम ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न पीडीएफ कहाँ मिलेगा? गो टू वेबसाइट www.ici.org, अंडर स्टूडेंट टैब देर इज अ पोर्टल कॉल्ड BOS नॉलेज पोर्टल, click on that, you will get a section wise and skill wise weightage. So go over there, click there, and go to the intermediate course paper 5, you will get a section wise and skill wise weightage for the paper. Ankit is asking कि मैम हाउ टू स्टे calm in exam, as when I give mock test at home I scored good marks, but in exam I am not able to stay calm in particular paper, kindly guide me. फर्स्ट ऑफ ऑल, वही जो अंकित हमने अभी बताया कि आपको 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और आपको 3 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट है। बट प्रेम, मतलब 3 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कैसे कर सकते हैं? वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने प्रैक्टिस ना की हो। आप अगर 25 मिनट्स में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं, ओनली दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस वेल इन योर होम ऐप. You should practice each and every question. Once you will practice one question, it will take 15 minutes to do. The second time you're doing that question, it will take 12 minutes. And the third time you'll be doing that, you might be able to finish that question in 9 minutes. So you saved 6 minutes. So this way, more practice will help you to secure good marks and to do questions very fastly in the examination, And which is Ankit, very you much are required. asking to stay calm. स्टे काम के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप डर कर जा रहे हैं तो आप कभी काम नहीं रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, काम रहने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा डू पॉजिटिव Be थिंक, positive, है ना? yes. पॉजिटिव रहना है। अब बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? Only कि blood group B positive will not work. और सिर्फ बोलना नहीं है कि आई एम बी पॉजिटिव, आई एम नहीं नहीं नहीं, बी पॉजिटिव का मतलब है थॉट्स है, इट्स जस्ट अ थॉट। उन थॉट्स को भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। थॉट्स है, ठीक है, डर लगता है तो एक्सेप्ट इट कि हाँ डर लगा, जैसे आपने कहा डर लगा, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उस डर से निकलने का रास्ता भी देखना है, सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना है, आगे का भी रास्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। नेगेटिव जैसे कि जो भी आपको डरा रहा है, हो सकता है आपके सर्कल में कोई ऐसे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में, जो बार बार ये कहते हो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे डर लग रहा है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी उसको हटा देंगे। दूसरा, ये डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेटवर्किंग साइट्स।
social media. सोशल मीडिया, You, क्योंकि जितना as soon scroll as करते you हैं, disconnect yourself, you will be able to focus more on if your you examination. disconnect yourself from the negative things, automatically Yes. positive things will come to you, Attract है you. ना? Absolutely. It automatically comes to you and attracts you. और ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप नेचर में जाएं, अपने आप को पूरे दिन में ब्रेक दीजिए अपने लिए, कि आपने आधा घंटा 1 घंटा आप अच्छा म्यूजिक सुनना है, या आपको डांस करना है, या आपको पार्क में जाना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि the healthy mind, healthy body and healthy और रिलेशनशिप, और आप आपका वर्क भी उतना ही अच्छा करेंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योगा करें, कुछ भी करें। और हेल्दी ईटिंग, स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर, है ना? तो आपको हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने के लिए जंक फूड से अवॉइड करना है। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप पानी पीजिए, आप दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग, तो आपको इस काम रहने में आपको हेल्प करेगा, है ना? अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा पढ़िए, फिर एग्जाम में आपको खुद अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। So it is rightly said, balanced diet, good mind and balanced atmosphere will help you to achieve good marks. But this is important, plus your practicing all the question is also very important. So for the exam, this pattern has been already taught to you, that how the question comes. Be focused, be prepared, that do that question, solve that question which you know the best. Since you have there might be some situation, for one part you know the two parts, and for the other question you know the other two parts. So now you're confused that which one to choose, whether to choose this question or to choose the other question. Choose, analyze yourself, which question you know the best. Maybe the other part you might be knowing 70 to 80%, and the other part you're knowing only 30%. So choose that question that I am confident that I'll be able to do these two parts more better, and for the other part I'll be able to devote some time and to contribute some time. So your choice is very important for the performance in your And always examination. attempt all the sub parts in one place. In one go only. So if you are unaware that you do not know an answer and you want to devote some more time, so leave that space and start the other question. Akash is asking कि ma'am, we have to attempt AS question in starting. It is not necessary कि आपको AS1 the question number 1 is compulsory, but it is need not be necessary कि आप starting ही question number 1 से करें. You can attempt it after any other questions. But it is a compulsory question. There is a no choice for this question. You have to attempt it. All the question, all the parts. So that means the accounting standards form a very important part of your syllabus. Without that, this is a 20-mark question. Don't forget. Okay. So coming to the relevant legislative amendments of limited Here are some liability amendments in partnership. paper 5, which we are going to discuss here. Yes. So coming towards the LLP, Limited Liability Partnership Act, where if in section 35 of the LLP Act 2008, this has been inserted, the following has been inserted, that if LLP fails to file its return before the expiry of specified time, such limited liability partnerships shall be liable to a penalty of 100 rupees each day. This is 100 rupees each day, during which such failure continues, subject to a maximum of 1 lakh rupees and 50,000 rupees for designated partners. So the liability, the penalty is 100 rupees per day, and it can extend to 1 lakh rupees if you fails to file the annual return under subsection 1. All right. And if LLP fails to comply with the provision of subsection 3, such LLP shall be liable to a penalty of ₹100 each day till such failure continues, subject to a maximum of 1 lakh rupees for LLPs and 50,000 rupees for every designated partner. It is more or less the same.
Any LLP which fails to comply with the provision of subsection 1, subsection 2 and subsection 4, such LLP shall be punishable for not less than 25,000 rupees. For all these three, subsection 1, 2 and 4, the liability is for penalty is 25,000 rupees, and which can extend to 5 lakh rupees, and every designated partner shall be punishable with a fine of not less than 10,000 rupees. The designated partner liability for a penalty would be 10,000, which can extend to 1 lakh rupee. So please go through these penalties. Here the financial disclosures and return in section 34 of the LLP Act, it has this following has been added, that provided that the central government made by notification in the official gazette exempt any class or classes of the limited liability partnership from the requirement of the subsection. That's why the for subsection 5 the following shall be substituted. These penalties have been substituted. What is small limited liability partnership? This has been added. The small limited liability partnership means the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore rupees as may be prescribed. So the contribution should not exceed 25,000 rupees or such higher amount not exceeding 5 cr as may be prescribed. The turnover of which, this is the contribution, the turnover of which as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding the previous year does not exceed 40 lakhs rupees or such higher amount not exceeding 50 crore not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed. Or okay, so coming towards the limited liability partnership, definition of business has been amended. As per this, the business includes every trade, profession, services, and occupation except any activity which the central government may by notification exclude. The subsection 1 of section 7 of LLP Act says that the words 82 days during the immediately preceding 1 years and the word 20 days during the financial year shall be substituted. This means this is now for the purpose of this section, the term residence in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year. So coming towards the legislative amendments and everything, so Asha will help you for this SLR holdings held to maturity. These all are the amendments is already provided in the RTP, which is applicable for the November, and most of the 2023. amendments is already incorporated in the study material. For this November 2023 examination, September 21 edition is applicable. And if a student is having addition which is prior to the September 21, they can refer these amendments and articles. For as per the SLR, for this amendment, the rate will be given as for the A to D. 22% for the June 30 to 23, 21% as on 30th September, and 20% for as on 30th December 2023, and 19.50% for as on the 31st March 2024. That means up to 24, the rates are provided. There are the certain amendments which are in Schedule 3. Amendment which is related to Schedule 3 is in the exercise of the power conferred by the Section 1 of the Companies Act 2023, Central Government made amendment in Schedule 3 which is related to the white MC notification and which is applicable effect from the 1st April 2021, and these amendments have incorporated in the appendix which we have already incorporated in the study material, and you can refer the study material from this link. From the BOS knowledge, you can go into there and you will find the study material
which is the September 21 edition, and you can refer the same material. सारांश BOS में कहाँ पे? As we have already discussed, September 21 edition is applicable. And one question, when student is asking question, ma'am, from where we can get the saransh? Students, from if you are going to the ICAI website, then go to the student tab, then BOS knowledge portal, where in the end you will find a subject-wise capsule. Please click on the intermediate button and you'll get the capsule for this saransh and capsule. You can show it here. Yeah. We will try to show it here. It will be very helpful for you. In the ICAI website, now See go to here, I'm going to BOS knowledge portal. From the student tab, I'm going to BOS knowledge portal. Now, I have clicked on BOS again knowledge click on portal. the BOS knowledge portal. Here, subject wise capsule. This. Click here and you will find the saransh last mile, है ना? For the first number one is the accounting standard. For the accounting standards. And if you want to find for the subject wise is already available on capsules here. Again, we are going to the subject wise capsule. This is in intermediate. For accounting, paper 1 capsule will be there. Paper 2, paper 3. For all papers, capsule are available for you. I think we are trying to open it and it will be very helpful for you. See, these are all small notes. These are all notes. Tabular notes. That's so colorful notes. You can easily go through these questions, these notes, and prepare for your examination. So this is all the last minute preparation, but please understand this does not substitute your study material. For thorough study, you need to study from the study material only. Don't think that this will only help you to achieve good marks in examination. No. For thorough study, you should study material first. Asana is asking, ma'am, do we need write every question in order? No, student. There is no any necessity कि आपको question order में करना है. As we have already said, कि first of all select the question which you are aware that which you know the best. Which you know the best. That means sequencing is not the criteria. It is not required. जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, इफ यू थिंक कि क्वेश्चन नंबर 3 यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट और आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 करें. आफ्टर दैट इफ यू थिंक कि क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड in 15 minutes time which question you are going to exclude. After that now order decided कि आपको आफ्टर रिमेनिंग में से आपको सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन आता है. आपने क्वेश्चन 3 किया, फिर आपने क्वेश्चन 6 किया, फिर आपने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 4 किया, है ना. वी आर सेइंग कि आपको जितने भी सब पार्ट्स है वो एक प्लेस पे करने हैं. अगर इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 is having 3 parts A, B and C, then try me. You have to attempt all the sub parts of 3 at the one go only. Or one place only. If you don't know part 2, if you don't know part 2, leave 2 pages for that and then do part 3 and then go for another question. And also after completing your answer, if during the revision time आपका माइंड क्लिक करता है कि आप उसे सॉल्व कर दे. स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे, आफ्टर जब आप कंप्लीट करें तब आप उस पे ब्लैंक शीट पे आप बेशक क्रॉस कर सकते हैं कि आपने वो किया ही नहीं है ना. बट जब आप पेपर अटेम्प्ट करें स्टार्टिंग में, तो यू शुड लीव सम स्पेस कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ना आप उसे फिर से कंप्लीट कर सकें. ठीक है. So I would like to bring another thing, an important thing while doing your examination in your examination hall. The role of calculator is very important. See, all the calculation has to be done on calculator only. So practicing calculator is very important, because students many time out of the tension, out of this anxiety or out of the fear, they miscalculate. Excitement also. Yes, excitement also. Excitement में what they do, they bring the new calculator with the new key. Even
आप पैटर्न भी चेंज कर लेते हैं, Exactly. मॉडल चेंज हो जाता It है. is always advisable to use that calculator only which you have used in your practice, because your fingers knows where what is coming. So अगर आपका always कैलकुलेटर खराब हो गया and you need new new then calculator. try to purchase the same model which you have practiced. Yes, absolutely. And another thing, practice on the new also. At least do 2-3 times practice on your new calculator as well. Then only you will be able to practice. Your hands would be on this. See, what we do is usually we take wrong figures. For example, if I am reading the question paper, it is written 59,000 and somehow on calculator I write 95,000. My question would be incorrect. So it is very important to look properly. Your mind should be there in the examination hall. Stop thinking anything, everything, anything apart from the question paper. So please be focused. If it is 59, you have to type 59 only. Sometimes the figure comes around 10250 and we write 10025 or 1015200. So this will all lead to your wrong answer. Because lots of computation is required in this paper. Yes. And computation is the main important part of this paper. It is core of this paper. So please be focused. Practice on your hand should be very much good in your calculator, and please take that calculator only which you are using in your practice. You are the same calculator and the same pen. And be alert, be conscious what you are typing and what here is here in the question even paper. sometimes na Priyamada, what students do when they are carry forwarding the figures, they also make the some mistakes. These are the common mistakes कि आप carry forward कर रहे हैं mistake from one page to another, one account to another, and the wrong figure is transferred. अगर आपने रॉन्ग फिगर ट्रांसफर कर दी स्टार्टिंग से ही इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इफ द नेट प्रॉफिट इज 5,05,000 एंड यू हैव ट्रांसफर 5,50,000, तो आपका बाकी का आंसर तो सारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही क्रॉस हो गया. तो ट्राई कि जब भी आप फिगर्स को आप ट्रांसफर करें, कैरी फॉरवर्ड करें, कंप्यूटेशन करें, बी केयरफुल, बी अटेंटिव कि आप सेम फिगर, अब वो अटेंट प्रैक्टिस ऑन द कैलकुलेटर ओनली. तो क्या होगा, हम कभी हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें रिटर्न में कैसे करना है. द वन इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑल्सो हेयर कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हम फिगर्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब भी हम अवेयर नहीं होते कि हम अलग क्वेश्चन की फिगर्स को भी लिख देते हैं. क्वेश्चन 2 की फिगर्स क्वेश्चन 4 में चली गई बिकॉज आवर माइंड इज ऑन क्वेश्चन 2. हमने पहले क्वेश्चन 2 किया, आवर माइंड इज ऑन क्वेश्चन 2 एंड व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चन 4 द सेम फिगर गोज टू द क्वेश्चन 4 which is very wrong. Your question 4 will be wrong. So please be focused, be careful what you are reading and what you are doing. Your mind, your hands should be in the same lane, right? And the main thing is that कि while doing your calculations na, sometimes students do all the calculation in rough part only. Don't do this because working notes are the part of your question. Yes, I was coming towards this. And working notes are also having the marks. That means अगर किसी क्वेश्चन की वर्किंग को आपने रफ में कर दिया, that means you are losing your marks. Always do your all calculation by giving the proper working note number. Yes. आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको लग रहा है वो बेकार भी है, आपको लग रहा है इट्स यूजलेस कि मैं उसे कैलकुलेटर पे ही कर देते हैं, नहीं नहीं, मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट नंबर और आप उसको वर्किंग नोट में प्रॉपरली क्लीन क्लियर लिखिए, है ना, नीट एंड क्लीन लिखिए, ताकि आपको वो मार्क्स मिल सके. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स ने वर्किंग में ठीक किया है और फिगर भी ऊपर चला गया है, तो आपको उस वर्किंग नोट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे. दीज आर द की टिप्स. यस यस, जो आपको मार्क्स ज्यादा लेने में आपकी हेल्प करेंगी. इसको मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ. फॉर एग्जांपल एक एसेट है, फॉर एन एसेट देयर इज एन एडिशन आल्सो, देयर इज अ डिलीशन आल्सो, प्लस अ डेप्रिसिएशन आल्सो. सी व्हाट यू विल डू इज व्हाइल मेकिंग द बैलेंस शीट, व्हाट यू विल डू इज यू विल यूज द कैलकुलेटर. ओके, प्लस दिस एडिशन माइनस दिस deletion and minus this depreciation, you'll file the final figure over there, but the working should be there
form part of your solution. The benefit of doing the working note. Here in the working note, you'll write the asset value as on the opening date plus addition minus deletion and minus depreciation. You'll write that. But somehow, what happens is at the end of while doing the question, the balance sheet doesn't tally. It happens with everyone. Balance sheet doesn't tally, and you've written a correct figure of asset. The closing value of asset is correct, but you will get mark of that working note because the examiner knows that he has added the addition and he has reduced the depreciation and everything. The working note shows that you are already aware how the asset is to be treated. So we will get marks. But if you have not done the working note, you will not get marks. All right, so in this way the working note forms a very important part of your solution. Sahu is asking, ma'am, how do we better in available time 1.5 month? So it is again the question which is related to the time management. If you have completed your one round of study, that means you have already gone through your whole study. Now you have going to the second round of study. For third round of study, you have to leave some days because you have to prepare a timetable. First of all, prepare your timetable, how many days are remaining and how many topics which you are going to cover already. कुछ कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें उनका साहू यू आर वेरी मच गुड कि आप वेल नो है कि आप थोड़ी टाइम में रिवाइज कर लेंगे. जिन टॉपिक्स को आप फिक्स मानते हैं कि हाँ ये अच्छे से कंप्लीट है, आप उसको डेली बेसिस पे कुछ दिन के गैप देके रिवीजन देते रहें. उसमें आपका टाइम कम लगेगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी और आप कंसेप्ट भूलेंगे नहीं. नाउ अब आपको ये एनालाइज करना है, ये जज करना है कि विच टॉपिक्स आर लेफ्ट, जिसको आपने छुआ भी नहीं है ना, उसको टाइम डिवोशन ज्यादा चाहिए, तो कुछ दिन निकाल के पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए. उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन के लिए, क्योंकि जो फाइनल डे में आपको करना है उसके लिए आपको 1 वीक लीव करना पड़ेगा या 2 वीक लीव करना पड़ेगा. अब रिमेनिंग डेज जो बचे हैं आप उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाइए. इतने दिन बचे हैं और इतने दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं ये आपको पता होगा, आप उसके बेसिस पे जज कीजिए. अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो उस 10 घंटे को आप डिवाइड कीजिए अपने चारों पेपर में. आपके जितने भी पेपर है, 4 पेपर है, 3 पेपर है, उन सब में डिवाइड कीजिए डेली बेसिस पे इस तरीके से अपने. उसके बाद ये रिवीजन करने के बाद आपको अपने दूसरा टाइम टेबल बनाना है कि आपको उस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स हैं, कितने आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, किस में आपको ज्यादा टाइम करना है. ये वर्कआउट हर स्टूडेंट को अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से करना होगा. हम सिर्फ आपको एक ब्रीफ में या आपको सिर्फ एक गाइडेंस के नोट पे आपको एक हेल्प कर सकते हैं कि आप ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट वो मेक द टाइम टेबल. तो आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे. एक स्टूडेंट ने ये भी पूछे कि मैम डू वी नीड टू रीड एवरीथिंग इन द स्टडी मटेरियल. आई थिंक हमने स्टडी मटेरियल बनाया इसलिए कि आपको हर चीज रीड करनी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रोविजन ऐसे हो जो आपको नहीं पढ़ने. अब वो कौन से प्रोविजन है, जैसे कि बैंकिंग में स्टार्टिंग में loads of the theory is given which is not related to the practical, so you can avoid it. And the weightage of the marks which is given to the banking and the NBFC is very low. तो I think you can focus on the practical part only. जो उसके practical part है, क्योंकि अब time is very short, तो आपको time manage कैसे करना है. आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ जज आप यू कैन चेक फ्रॉम द सजेस्टेड एंड आर्टिफिस कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी में किस टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं. उसमें आपके जिस टाइप के प्रोविजन से रिलेटेड आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट से रिलेटेड आते हैं, तो सिर्फ उससे रिलेटेड आप थ्योरी देख लीजिए. जो पहले की आप बैकग्राउंड मटेरियल जो दिया है यू कैन अवॉइड दैट, है ना. बट फॉर द अदर टॉपिक्स, फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, आपको ईच एंड एवरीथिंग रीड करनी है, बिकॉज दीज आर दी कंसेप्चुअल नॉलेज. आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यू कैन अवॉइड दिस कंसेप्ट ना, यू कांट लीव दिस टॉपिक्स. आपको उसमें से मार्क्स आएंगे, आपको कंसेप्ट रीड करना है. आफ्टर रीडिंग द कंसेप्ट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इफ यू आर गोइंग टू सोल्व, इफ अमलगमेशन हैव 10 क्वेश्चंस, है ना, मे बी इन 10 क्वेश्चंस में 3 to 4 क्वेश्चंस में सेम टाइम ऑफ एडजस्टमेंट इज रिपीटिंग, है ना. बट जो एडजस्टमेंट न्यू है, हाईलाइट करो उसको, अंडरलाइन करो, बिकॉज इन क्वेश्चन पेपर ना, क्वेश्चन में क्या डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आर गिवन इन द वन क्वेश्चन ओनली. तो जो सेम टाइप की एडजस्टमेंट है, जो सिंपल है, आपको समझ में आ गई है, आपको उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है. बट जो एडजस्टमेंट डिफरेंट है, न्यू है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, हाईलाइट इट, मेक प्रॉपर नोट.
कि Yes. दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट के लिए हाउ इट गोइंग टू बी ट्रीटेड। जब आपको उसको ट्रीटमेंट पता होगा तो आप उस एडजस्टमेंट को किसी भी क्वेश्चन में जहां वो फिट है, आप उस एडजस्टमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। But adding to this, you analyze that point and understand. That doesn't mean that you mug that adjustment. रटना नहीं है, उसको समझना है, एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन करनी हाउ है. ट्रीट इट, कि Yes. अगर इसमें प्रोविजन है, इसमें डेप्रिसिएशन है, तो उस एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट किया गया, उसका ट्रीटमेंट आपको अंडरस्टैंड करना, वो समझना है, और उसकी Absolutely. एप्लीकेशन। तो उस तरीके की एडजस्टमेंट कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में होगी तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। Now, helping this, you highlight this. इसका क्या help होएगा आपका? When you are doing the last minute preparation, when you are going through the question paper, you going through your preparation, last day preparation, you will see, okay, this question has been highlighted, means this adjustment was very good. So I need to understand this adjustment. Maybe you can devote 1 or 2 minutes for that adjustment only. The easier adjustment you're already aware of, since you've already done preparation. Maybe 2 times, I'm expecting 2 times you've already done your preparation. But for last minute preparation, you have marked that important adjustment, that critical adjustment, so that you can solve that adjustment at that point of time only. लर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द टू क्लियर द एग्जाम। Yes. अगर आपको ये कह रहे हैं कि मग नहीं करना, मग का मतलब है कि आपको सिर्फ उस चीज को एज इट इज मग नहीं करना है। आपको मग क्या करना है कि उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, आपको उस एप्लीकेशन को मग करना है, सो दैट यू कैन अप्लाई दैट प्रोविजन इन एनी कंडीशन। आपको किसी भी तरीके की सिचुएशन केस सिनेरियोज इज गिवन, यू कैन अप्लाई इट वेरी इजिली, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, यू हैव टू चेज योर ड्रीम्स। जब तक सपने नहीं देखोगे, उन सपने को पूरा करने के लिए आप भागोगे नहीं। ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स। और जो सपने होते हैं वही सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आपको जागते रहना है। जागते रहने का मतलब नहीं है कि सिर्फ आंख खोल के बैठना है। आपको चीजों को पाना है, अपने ड्रीम्स को भूलना नहीं, डेली अपने आप को याद दिलाना है यू आर गोइंग टू बी ए चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको मेहनत करनी है, थोड़ी टाइम की मेहनत है, यू हैव टू हार्ड वर्क, और हर हार्ड वर्क आपको पे होता है ना। आपको उसमें पेन होगा तो आपको पे भी होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। It sometimes happen when you're doing your question paper, when you're solving it in the examination, or it many times happen, it has happened with us also, that you have done the question, you know very well, but at the time of preparing balance sheet, maybe a consolidation question or any other question, the balance sheet is not tallied. Don't panic. Give yourself 5 to 10 minutes. If you are still unable to solve, if you are still unable to tally that balance sheet, leave it. Don't worry, leave it and do the other question. Maybe after at the time of the revision, when you again try to solve that question, you'll be able to tally that balance sheet. This has happened with me many times. Sometimes it happens that I couldn't tally that balance sheet, but at the time of revising all answer sheet in my intermediate exam only, at the time of revising, I could able to solve that. The reason is that when we are going to do anything ना, we are stuck in anything. अगर हम किसी चीज में stuck हो गए तो माइंड हमारा एक ही टाइप की प्रोसेसिंग करता है ना। Exactly. हम सेम उसी दर्रे पे वापस सेम स्टक हो गए। अब आपको अगर नया रास्ता चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड द न्यू वे, तो हाउ इट विल फाइंड, गिव सम ब्रेक। Yes. एंड हाउ यू विल ब्रेक, एग्जाम में तो आप ब्रेक लेके बाहर नहीं जा सकते। सो हाउ यू विल गिव ब्रेक टू योर माइंड कि आपको वहां से स्टक कैसे निकालना है। क्योंकि कॉन्शियसली तो आप वहां से हट रहे हो, बट अनकॉन्शियसली द प्रोसेसिंग विल बी देयर, है ना। तो कॉन्शियसली अपने माइंड को मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, अनदर केस स्टडी। आप वहां पे कॉन्शियसली वहां सोल्व करें, बट अनकॉन्शियसली माइंड क्या कर रहा है, उस जहां पे आप स्टक हुए हो वहां से निकलने का रास्ता निकाल रहा है। जब अनकॉन्शियसली आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है तो आपके ऊपर इतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं आती, प्रेशर नहीं पड़ता, आप रिलैक्स रहते हैं, और फिर आपका माइंड रिलैक्सेशन में ज्यादा काम करता है, और आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करते हैं और गुड मार्क्स आ जाते हैं। Or anyways, in any case, if the balance sheet is not tallied, this should not hamper your second question, the other question which you will be solving in the other page. It should not hamper. If you're leaving that question, please leave, don't worry. Do give your best to the other question. You'll be able to secure good marks, and step marking is always done. Do not panic for that.
If you're not tally, balance sheet is not tallied, you have done the other part of your question paper, you have formed the working notes also, you will surely get marks. It is not that you won't get anything out of it. Now moving towards this PPT, we have already covered the syllabus. Syllabus, yes. है ना? We have already covered the AS4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 13 years which are covered in this paper. Yes. And we already aware now that these all the syllabus is divided into the 10 chapters and the 10 chapters are divided into the 4 sections. And for the all the 4 sections, the weightage we have already discussed. Yes. And we have already discussed the inputs which are provided by the BOS, the study materials, RTPs, study, the suggested answer, student journal, and the MTPs. There is a query. Let's see the query. In exam, we can highlight as we must use only black pen only. See, there is no need to highlight anything. The examiner knows what is correct. You just write it in a neat format. Underline the key point. That's it. Do not. You can use one trick ना कि if you has used only the black pen, तो black pen में क्या कुछ आपकी टिप बारीक वाली आती है और कुछ टिप आपकी थोड़ी डार्क वाली होती है. If you find different kind of the dark pen ना, you can use that dark black pen for the underlining your key points. But that does not mean that it should be neat. It make it easier for the examiner to read everything clearly. इतनी darkness में कहीं वो खराब ही ना हो जाए. We have already discussed how to attempt the accounting standard question. Read the paras of the accounting standards. These are related to the how to read the accounting standards. For reading and understanding of the concept and provision of the accounting standards, these are the key points. First of all, read the paras which are bold and italic carefully. These are for the bare text. If you are going to read the bare text, you can follow these points and then apply the provision through examples and the practices of the illustration of AS which are given in the study material and the practice manual. And it is advised that after studying each standard explained in the chapter, refer in the bare text of accounting standard. It is just only advisable. If you feel you can go for the read for the bare text, you can go. It is just advisable. Otherwise, all the provisions are already covered in the study material along with the charts and examples. We have already covered the syllabus. Yes. And this is the strategy for your preparation of exam. First of all, you should acquaint yourself with the syllabus, which we have already discussed in the very detailed manner. Yes, then assimilate the knowledge inputs provided by the Board of Studies. We already told you about BOS mobile app as well as BOS knowledge portal. Now, after that, plan your studies in a manner that you keep time for the 2 round of revision after your studies. As we are assuming that you have completed 1 round at of least studies. 1 round of your study. If So you, second round till is... now, if any student who has not covered the 1 round of the study now, don't panic. Don't panic. Don't underestimate yourself. You can do anything. If you want anything now, you can achieve everything. Achieve it. Don't worry. Just focus and try to complete as soon as possible. Complete at least 1 round and then start doing the other round. You still have 1.5 months with you. So you don't need to panic. It's okay. But yes, at this point of time, we expect that a student have completed at least 1 round of studies. And then practice solving a good number of questions. For good number of questions. We have already told you, make a register, solve at least 2 times every practical question. And for the good number of questions, loads of the questions provided in the study material. Yes. We have also provided the RTPs. You have the suggested answer, the past year questions and the MTPs. That means number of good questions are available. Well, with you. And for the all the good questions, highlighted, use the adjustment which are new and which are the tricky. It will be very helpful. So doing the second round of preparation, it is not necessary if you have done for one adjustment, you have done 3 illustration. So it is not necessary in the second round also you need to do all 3 illustration. You take one question and do that. That means you're already aware of the adjustment and you know the adjustment. So spend lesser time on it. So do only one question out of those 3 illustration and solve that question. One more thing we would like to add here, na, ki, some students ask
many questions is asked related to the format for the preparation of the financial statement, ki whether they can prepare in the schedule 3 Division format or schedule in the 3. T format. Student, please note down the only for the complete schedule 3 format is applicable. If you are going to solve in the T format, na, it will not be helpful for you and you will not get any marks for it. For the company's schedule 3 is applicable, so you have to prepare your balance sheet in schedule 3 format only. एंड डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल, है ना? yes. तो जब आप शेड्यूल 3 में बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, और फॉर द कंपनीज के लिए इट इज तो एप्लीकेबल बाय द गवर्नमेंट, तो उनके लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं, एंड इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट. अब आप students asking कि it is a very lengthy, how to learn it, it's very simple. When you again हम फिर वापस फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं कि प्रैक्टिस. आपको फर्स्ट उसको फॉर्मेट को रीड करना है और उसको लर्न करना है ना? आफ्टर रीडिंग एंड लर्निंग इट, आपको सिर्फ जो आपको फिगर्स पता है आपको वहाँ फिट करनी है. So it's very simple. Always you have to solve your company's account question in schedule 3 format only. And you have to prepare your notes. Your notes are very much helpful in your exam times revision. And always keep yourself updation. For updation के लिए BOS app पे always mobile app, BOS mobile app, there are many things available which we have already told you many times regarding this, right? Okay, this also, while attempting the theoretical question, what important points should be borne in mind? This is very important because there are many students who usually skip theory questions. Say, okay, theory questions are not that important, but it is not so. Theory question will help you to gain more marks. Rather, sometimes for yes, the accounting paper, there are no such theory question. These yes, are all the application oriented questions. So please. So ये concept ही आप you have to change this concept कि accounting में theoretical. And write it in your own language, but write it correctly, crisply and clearly. No story will be. No story, yes. Don't cook stories. The information given information and the requirement of the question, you should be read very thoroughly. Then think about the aspect, knowledge and the knowledge aspects and its application if required. Then clearly and crisply write the answer. All right. These inputs we have already discussed. The plan is you have to plan. The objective of this is to secure good marks and come with the flying colors in CA final exams. How to improve marks? For improvement, some examination tips during the entire session. We have tried to give you the tips that your working note should be a form of your part of your answer. Try to attempt all the subparts in one go only. Try to attempt the question which you knows the best. Try to give your answer in the neat and clean form, and always give the company's accounts solution in the schedule 3 format. And proper utilization, maximum utilization your 15 minutes. Make the time management and spare some time for the last 10 to 15 minutes for your last revision your answer sheet. And your speed should be good, and for making the speed good you have to make practice. These are the general tips, and also we have also discussed the common error, which are the common error which we have already noticed. We have noticed कि students make these are the common errors, mistakes, है ना? So we have already discussed this कि first of all write the answer which you knows the best. Attempt all the sub parts of question at one place. Your handwriting should be eligible and speed. And for the any disclosure, this is the main point which we have skipped. Yes. We are if any question, if you think there are the assumption based and you think there can be different kind of answer, on which assumption you are going to solve your question, please give that assumption clearly in the answer sheet. Because if for example we are taking the example of AS3, if the question is asking you to prepare the AS3, है ना, AS3 के लिए आपको operating बनाना है, but it is not clear कि direct method है indirect method. So it can be in the direct or it can be in the indirect. Question is not clearly mentioning कि आपको किस method में prepare करना है. Then you have to clearly mention in your answer that you are going to solve that AS3 is on the basis of the direct method. कि आप direct method पे कर रहे हैं और you are going to solve the AS3 in the indirect method. So logical assumption you should be given clearly. And because sometimes na interpretation can be different. AS आपने किसी ने company ने
शेयर्स इशू किए एट ₹20, बट उस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट काइंड में भी ले सकते हैं कि 20 इंक्लूडिंग द प्रीमियम है या विदाउट प्रीमियम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट ना, कि जब एक पर्सन ने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन कैन बी चेंज। यस, बट आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि इसमें इंटरप्रिटेशन इशू आ रहा है, यू शुड क्लियरली मेंशन कि आपने इस बेसिस पे किया है ना। एंड ऑल द वर्किंग नोट always be the part of your answer, and always give the disclosures. now prepare a brief notes. Here we have already discussed. Translate your knowledge into brief notes. Always, whenever you're doing a chapter, please write your notes in your own language. Then you'll be able to analyze that this much you have understood. You may also prepare diagrams in that support. And at a later point, maybe in the second revision or in the third revision, at a later stages of your preparation, you'll be revising in lesser time and with lesser efforts. Since you have written in your own language, you'll be able to understand what you have written. And this way, once you're writing a provision in your own language, it will be helpful in your examination also. Once you've already written, and if the same provision came in the examination, you'll be able to write another. Second time, it will be easier for you to write, right? So how to manage time in the examination, we have already discussed. Yes. Make optimum use of 15 minutes which is given for the reading. Then go through all the questions quickly. Select the questions that you would be attempting from all the questions. Mark the question which you will be attempting first, and allocate an estimated time for each question based on their difficulty level and marks carried, keeping aside 10-15 minutes for revision. Adhere to the time allocated. Write each answer in commensurate with the marks which is the question carries. Answer should be precise and to the point. Okay, how to attempt question in the exam? Give all necessary working note as a part of main solution to the problem. If there are many approaches to solve the question, that Asha has given you an example for cash flow statements. Mention the assumption considered in the solution. If you are doing it through direct method in the cash book or indirect method, please write it clearly, since it is the basis on which the solution is derived. The approach to be selected should depend upon the uniform and the require information and the requirement of the problem. In case the question is question based on practical application of accounting standard, support the answer with the provision of the accounting standard or the guidance note. See, in this it is right to support the answer with the accounting standard or guidance note, but if you are not aware of the number, AS number, please do not write. All right. Do not mention wrong accounting standard name and number or para number in the solution. In case of not being sure, better not to quote the title or the number of accounting standards or the paragraph. These are the general mistakes which are committed by the students. We have already discussed in the standard based questions, students were unable to substantiate their conclusion by applying the provision of standards. This is lack of knowledge in the standards. And they exhibit lack of depth understanding of the concept. And one of the common error which we have commented, the carry forward of the wrong amounts from one page to another. Yes. They also did not make and the format of the financial statement. Which we have discussed, you should prepare your balance sheet in the Schedule 3 format only. And the answer did not reflect the recent amendments which are taking place in the subject. Many students did not provide all necessary working notes which should form a part of solution. Student did not mention the assumption considered while working the solution which lead to deduction in marks. The twist in the question put the student in a state of confusion which was ultimately reflected in the question, in their solution. For example, keep your mind very much open. This is a very important point. For example, you have done a question, maybe an AS based question, and you are very much through with the provision. But when you read the question, you tend to read only that part of the question which you have already done in your study material.
but sometimes there is a twist in the question which you usually ignore because you think, okay, this is my question, I've already done in my practice, so I should Read not. the question paper Very carefully. Keep your and eyes and mind open. and provide your answer as per the requirement of the The question. question. Recent problems अभी जो अभी हमने we have to face कि हम we have checked कि बच्चों ने क्या किया, the for example in operating the same we have discussed in paper 1 also. The requirement of the question was to prepare the operating activities as Cash per the flow from operating only for the operating activity. But the answer provided by the students all the For the full cash flow the statement. financials including financial activity including the investment. Investment. What about this? This आपने lead क्या to हुआ? wasting your time, wasting your time, wasting this your energy, energy. और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मार्क्स मिलने. Answer should be as per the requirement of the question. Always read the requirement of the question carefully. Sometimes what the students do कि अगर डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं तो जो अकाउंट्स बनाने जितने मांगे हैं आपको उतने ही बनाने हैं, अपने आप से ऐड ऑन नहीं करना है. You will only lose your time for this because you won't get more marks. For 5-mark question you won't get 7 or 8 marks if you do more. So 5 marks only for 5 marks. Student gives an unnecessary irrelevant detail for the small questions, thereby spending unnecessary time on the question which is not required. So it is advised that the student should restrict their answers according to the marks allotted to that question. That is what we are saying again and again. Please read it very carefully or very thoroughly. Sometimes maybe there is in your study material there is an addition in the in an asset, but in the question paper it comes out to be deletion in the asset. So you tend to add, and the figures are same, you tend to add those figures. So please be very careful while reading the question paper. Do and don'ts. Some students always ask, ma'am, can we skip this topic? Can we this? देखो, first of all topics are very much necessary. You have to go through all this because आपको नहीं पता. Sometimes you feel कि this topic is I am not मुझे अच्छा नहीं लगता, I can skip this. But question उसका इतना easy आ जाए, you can attempt it. और जिस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं ये इजिली कर लूंगा और उसमें कुछ ऐसा ट्रिकी आ जाए आप सॉल्व ना कर पाए, तो इसलिए ऑलवेज डोंट गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडीज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन और द रिवीजन. द ऑल टॉपिक्स आर वेरी मच इक्वली इंपॉर्टेंट. Focus on the theoretical conceptual understanding of each topic for the development of the analytical skill. आपको you have to read the concept very carefully. आप उसे thoroughly read करें and that try to understand कि ये जो concept provided है इसकी application कैसे होगी. For example, amalgamation adjustment reserve. जब आपने उसे कैलकुलेट कर लिया आप उसको एंट्री कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो अगर आपको पता है कि अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व की एंट्री कहाँ है, आपको उसको बैलेंस शीट में कहाँ लेके जाना है, तो आप हमेशा वहीं लेके जाएंगे. Do adequate written practice of the practical numerical questions. This will you help in time management and attaining speed. Be careful while using the information which is given in the question for solving the question. Assess your preparation level by attempting previous year questions under the mock test examination. For mock test, which we have already advised you कि you should attempt mock test papers. क्योंकि जब आप when you go to attempt the mock test paper in examination scenario, only then you can analyze yourself, you can judge yourself, and by comparing your answer with the mock test answer, you can judge yourself कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरी. अब आपको क्या है, उसका सिर्फ आपको आंसर टैली नहीं करना है. प्लीज बी केयरफुल कि मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि आपको आंसर चेक करना है. यू शुड चेक योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो. यस, कि हमने क्या प्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड किया, आपने क्या दिया है ना. तो उसके बेसिस पे आपने वर्किंग नोट अगर रफ में कर दिए हैं, हमने डिटेल में दिए, दैट मीन्स उसके मार्क्स हैं. तो यू शुड बी अवेयर कि वर्किंग नोट को आपको डिटेल में देना है. चेक यूर एएस. सिर्फ आपको एएस के प्रोविजन चेक नहीं किया कि आपने ये ठीक किया, आंसर ठीक. नो नो, हमने प्रेजेंटेशन में क्या प्रोवाइड किया. द बीओएस हैज प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन इन प्रॉपर फॉर्मेट. आपको फॉर्मेट भी चेक करना है. बिना फॉर्मेट के it won't help you. Schedule 3 is very important. बिना schedule 3 के it is better all the questions should be done. All these balance sheet questions should be done in schedule 3 format paper only. 5 is only based on the company's account. आपको you have to prepare the schedule 3 format only. You have no choice. Yes. है ना.
With this, we always are here to help you, to Yes. guide you. If you have any query, you can contact us with our mail ID accounting-inter@ici.in. तो आप उस Yes. पर अपनी कोई भी query भेज सकते हैं through the BOS mobile Mobile app. app. You can send your query. We always try to resolve your Query. queries. Even students mail भी करते हैं, phone call भी करते हैं. We always try to resolve your query. But one point is here कि be specific to a query. If you ask the general query, or if you ask कि आप you are asking through the mobile app कि ma'am please explain this para, that is not your query na. From the point Para. up, You might be unable to understand the specific line or maybe 3-4 words. Please ask that only. What is the meaning of that? The whole para would be very difficult for us to write it. All right. With this, we would thank you for attending the session, and we really hope that this session is very helpful and very gainful for you. Please be focused, focus on your preparation level as well as the assessment by doing the mock test paper, and try to prepare your timetable and Yes. make practices so you can manage your time in your examination. Yes. And the tips for the attending the exam and for the for the preparation which we have Already given in the discussed. today's Yes. section, try to learn and try to save them so that you can manage your time and you can score good marks. Yes. And you can This come is out your with a good result. Absolutely. This is your time only. Do not worry. Just focus on your studies. Do not think of the conclusion. What would be the last conclusion? Just focus on your studies only. Only and no Nothing is preparation. impossible in this word, word, yes. because the impossible is also included with the word possible, है ना. तो कुछ भी पाने के लिए आपको करना तो है ही. And you अगर have to आपको कुछ sacrifice everything. अगर Stop. जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको उसके लिए अपने तरीके बदलने होंगे, अपने इरादे नहीं, है ना. तो try to achieve your goal. Always remember your dream. Yes. That you want to become a chartered accountant, and we BOS as always here for you, always here to guide you, to help you. And if you have any query, you can contact us anytime. We'll reply you within a span of time. And we want to see you all in the CA final exam. All the best for your preparation. All the very best. With this, we would like to conclude the session for this. Thank you so much. Thank you for watching us.